हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्सपीडिया। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम कोई भी एक सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है तो वहाँ से कैसे हम एक ऑर्थोनॉर्मल सेट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले पहले वाले वीडियो में आप लोग चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे मैंने थियोरेटिकली डिस्कस किया था कि कैसे हम कोई भी एक गिवन वेक्टर स्पेस पे कोई भी एक गिवन सेट होगा तो उसको हम कैसे पहले ऑर्थोगोनल एंड देन ऑर्थोनॉर्मल सेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं उस वीडियो का। तो उस वीडियो के देखने के बाद आप इस वीडियो को चेक कीजिए, देन आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस वीडियो में हम पूरी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के स्क्रीन में देख पा रहे हो 3 वेक्टर्स गिवन है। उस 3 वेक्टर्स को ऑर्थोनॉर्मल नहीं है, हम लोग उसको पहले ऑर्थोगोनल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम ऑर्थोनॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है। तो पहले हम लिख लेते हैं वेक्टर्स क्या है। लेट v1 इज इक्वल टू 1 √2 एंड 1, v2 is equal to 2, 0, 2, 0, 0 and v3 is equal to -1, 1, 2। ठीक है, ये एनी सेट ऑफ वेक्टर्स। अब हम ग्राम स्मिट फॉर्मूला के तहत हम इस वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल वेक्टर में ले जाएंगे। अकॉर्डिंग टू ग्राम स्मिट वी कैन राइट W1 is equal to V1 is equal to 1 √2, 1. Now W2 is equal to, by Gram Schmidt, we have V2 minus V2 inner product W1 by W1 inner product W1 and ठीक है। Now we will put the value of all the 2, 0, that is the value of V2, minus inner product of that V2 2, 0, 0 and W1 means 1, √2, 1 and W1 inner product W1 will give you 1, √2, 1, 1, √2, 1, and finally here W1 1, √2. Now we will calculate these values. Okay. 2, 0, 0 minus, if you calculate this inner product, it will give you 2 into 1 plus 0 into √2, 2 into 1 plus 0 into √2 plus 0 into 1, and in the below it will give you 1 into 1 plus √2 into √2 plus 1 into 1, and 1, √2, 1 will be as it is. Okay, so what we get? 2, 0, 0 minus, this will give you 2 by 1 into 1, 2, 2 into 2 and 1, 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 2 by 4, 1,
root 2 comma 1. So we get 2 comma 0 comma 0 minus half into root 2 by 2 into, okay, this will give you, if you calculate this, 2 minus half is will be 3 by 2 minus root 2 by 2 and then finally minus half. Okay, this will give you W1. Now we will find W3. What is W3? W3 is nothing but V3 minus inner product of V3 comma W1 by W1 inner product W1 minus V3 comma W2 by W2 by W2 and W2. Okay, this is by Gram Schmidt formula. Okay, now we will put the value of V3. What is the value of V3? This is the value of V3. 1 minus 1 1 root 2. Okay, so V3 is minus 1 1 root 2, okay, minus inner product of minus 1 1 root 2 comma W1. What is W1? That is W1 1 root 2, right? 1 root 2 1. So in a W1 means 1 root 2 1 comma 1 root 2 comma 1 and 1 root 2 1. Okay, minus this portion. Okay, so that will give you minus 1 1 root 2 into W3. W3 means that. Okay, 3 by 2 minus root 2 by 2 minus half. Okay, inner product of 3 by 2 minus root 2 by 2 minus half. 3 by 2 minus root 2 by 2 minus half. And finally here is W2. 3 by 2 minus root 2 by 2 into minus half. Okay, now we will have to calculate this value. Okay, so this will give you minus 1 1 root 2 माइनस ऊपर आएगा. सिमिलरली अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे ऊपर आएगा माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 एंड रूट 2 प्लस रूट 2 रूट 2 प्लस रूट 2 आएगा 2 रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1 एंड नीचे आएगा 1 प्लस 2 4 इसमें आएगा 1 रूट 2 1 एंड
माइनस यहाँ पे आएगा माइनस 3/2 माइनस √2/2। यहाँ पे इनर प्रोडक्ट अगर कैलकुलेट करोगे तो आएगा माइनस √2/2। आएगा माइनस 3/2 माइनस √2 बाई 9/2 9/4 यहाँ पे आएगा 9/4 प्लस 2/4 प्लस 4 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12/2 12/4 that means जाएगा 3। okay and here 3/2 minus 2/2 minus okay. So then by Gram Schmidt that set W1 comma W2 comma W3 will be orthogonal. Okay, so that set is orthogonal. Now if you divide each of the vector by their norms, अगर आप हर एक वेक्टर को उनके नॉर्म से डिवाइड करोगे तो आप पाओगे कि एक ऑर्थोनॉर्मल सेट। सो if you take E1 is equal to W1 by norm W1, E2 is equal to W2 by norm W2 and E3 is equal to W3 by norm W3, then the set E1, E2, E3 is orthonormal. So starting from the set that we got the set E1, E2, E3 which is orthonormal. So by this like this we can find orthonormal set by Gram Schmidt. So that's it for now today. If you have any doubt you can ask me in the comment. I will try to reply on this. Okay, bye bye.